my Yes. point? Okay, that's good. Now, so in the last class we have completed what? Two dimension array. In the Yes, sir. last class we have completed two dimension array. Any doubt related to two dimension? How to declare two dimension? How to create two dimension? How to create n dimension? Any doubt? N dimension. Not talking about only two. I'm talking about what? N dimension. Any issues? No, sir. Okay, so I'm taking one example to implement what? Addition of two numbers. So first I need to take, in this case, first I need to take what? I'm developing I'm developing one class like matrix addition. What my point? Matrix addition. Inside the matrix addition class, I'm developing one two dimension array. Okay, suppose array one arr one, या फिर suppose array का नाम रखा मैंने a. Okay, I'm using name of the array is what? A. I'm taking the size like 3 cross 3. Can you please tell me how many number of total block will be created? तीन साइज की एक एरे बनेगी और हर एक ब्लॉक जो है इस एरे का, पहली वाली एरे का तीन तीन ब्लॉक की एक अलग एरे क्रिएट करेगा लाइक दिस. ये क्या होगा? ऐसी एरे बन जाएगी, है ना. 3 क्रॉस 3 में क्या होगा? एक ऐसी एरे बनेगी. ध्यान से समझना, ठीक है ना. हर एक एरे यानी कि 1 2, ये मेन एरे होगी, पेरेंट एरे. ये एरे भी अपने आप में थ्री एक वन डायमेंशन एरे को पॉइंट करेगी जिसका साइज 3 होगा. ये इंडेक्सिंग लिखी हुई है, ट्राई टू ऑब्जर्व. जस्ट ऐसी कुछ एरे बनेगी. ये समझ में आया नहीं? Yes, sir. ये 3 जो लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट फर्स्ट एरे. 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स. Each index will point one dimension array of size 3. ये वाली एरे की जितने जितने इंडेक्सेस बनेंगे, इसकी कितने इंडेक्स? 3 इंडेक्स, यानी 0 1 2. हर एक इंडेक्स हर एक इंडेक्स एक और वन डायमेंशन एरे को पॉइंट करेगी जिसकी इंडेक्स कितनी होगी? जिसकी इंडेक्सेस 3 होंगी. अगर ये 4 लिखा होगा तो 4 होंगी. राइट? Yes, sir. समझ में आ गया? इस तरीके से सब में हो जाएंगी. सब में, इसमें दोनों. बट नाउ आई एम टेकिंग 3 क्रॉस 3 की टू डायमेंशन एरे. आई एम टेकिंग 3 क्रॉस 3 टू डायमेंशन एरे का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? एनी इश्यूज? I'm taking one more array. That is what? B. Array 1, array 2, and that is I'm taking one more array. That is what? Result. In which you want to store the result. Right? Okay. First I'm taking one instance method to input the input array data. और my point easy है. तो आपको क्या करना है? इनपुट करना है. तो ये मैं सारे वेरिएबल नॉन स्टैटिक वेरिएबल ले रहा हूँ. कैसे वेरिएबल? नॉन स्टैटिक वेरिएबल. ओके. I'm taking a scanner class to take input from keyboard at the time of executing the program. Scanner system dot in. Okay. Input array data. Input array data. और my point easy है नहीं? Input array data. Okay. So I'm taking one parameterized array in order to avoid duplicate code. देखो इजी रहेगा ये ना. In order to avoid duplicate code. One. अब मुझे क्या करना है? Inside this array I want to take input from keyboard and its data stored into the A and B. Okay. Now I'm writing system dot out dot println. Enter enter an element enter an element into 3 cross 3 3 cross 3. Right?
not taking a, you have to use any array. You have to use like array word. Okay. So for loop parent index, sorry, parent index. I have already explained parent index, child index. Okay. Parent index equal to 0 and parent index less than what, array dot length, and what, parent index plus plus, parent index plus plus. In parent index equal to 0 and parent index less than what, array is the name of array, right? Array is the name of the array, dot length, parent index plus plus. Okay, I'm taking one more loop. I'm taking one more loop because of array is what, 2D. If array is 3D, then means what, we need to take three loops. If array is what, 4D, then we need to take four loop. Okay. If array is what, 5D, then we need to take five loop. Got my point? Yes, sir. Child, child index, child index, and child index. And here I need to write what, parent index. You understand or not? What is parent index? If you are confusing, like you have to take I instead of parent I. Parent index is the simple name of the variable. Don't get confused. Okay. J I'm taking. अगर कुछ बड़ा लग रहा है, that is why I'm taking J. तो parent index की क्या लिखेंगे, I and J. Got my point? Easy लग रहा है आप क्या? Okay. I want to take input in this array. Okay. But we have an array inside the parameters. So I'm taking array of I of j is what, scan dot next int. इसी देखो मैंने ये यहाँ पर ये array का क्यों लिया, असल में ध्यान से समझो, मुझे कोड छोटा करना था. अब मैंने क्या किया, सपोज मैंने यहाँ पर मेन मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. Okay. So first I need to create an object because of each and every member of the class are what? Tell me fast please. Non-static. So first I need to create an object. Obj equal to new class name and passing zero parameter to the call constructor. Okay. Very good. So first I need to call input data. Okay. First I want to take input in this array. पहले मैं क्या चाहता हूँ, I want to take input from this array and then I want to take input from this array. Okay. तो आप क्या करोगे, you have to pass a. If you pass a, then ये जो array create होगी a वाली, then that address will copy into this array. Then the data will be inserted in which array? In this array. If I call again this method on b of b array, then again this method will execute and copy the data and input and copy the data into b array. समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. ये कोड अगर आप ये पैरामीटर नहीं पास करते ना, दैट मींस आपको ये कोड दो बार लिखना पड़ता, एक एरे ए के लिए, एक एरे बी के लिए. हम completely reusing the functionality, right? If you are not passing this parameter, then you need to write this same piece of code two times. For first case you need to write a, and in case of second you need to write b, array name a and b.
बट मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इस मेथड को 2 बार कॉल कर दिया। पहले मैंने ए पास कर दिया, ए मींस ए वाली एरे पास कर दी, ए वाली एरे के लिए चलेगा। तो दोबारा मैं फिर से कॉल किया, दैट मींस एंड आई एम पासिंग बी, तो ये बी के लिए चलेगा। व्हाट माय पॉइंट, ए एंड बी ये दोनों वेरिएबल है, किस टाइप के वेरिएबल, इंटीजर 2 डायमेंशन टाइप के। किस टाइप के वेरिएबल, इंटीजर 2 डायमेंशन टाइप के वेरिएबल, इंटीजर 2 डायमेंशन टाइप के वेरिएबल है। व्हाट माय पॉइंट, इंटीजर 2 डायमेंशन टाइप के वेरिएबल है। ओके, सो है किसे, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक, टेल मी फास्ट। सर नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक, कैसे है नॉन स्टैटिक, तो नॉन स्टैटिक हैं। अब बट मैंने यहाँ पर ए और बी को कैसे यूज किया है, डायरेक्टली यूज कर लिया स्टैटिक एरिया के अंदर। सो कंपाइल टाइम एरर मिलेगी, सो यू हैव टू रिड्यूस कंपाइल टाइम एरर विद द हेल्प ऑफ by adding obj.a and obj.b. okay, all good. यस सर। तो दिस इज व्हाट, अगर आपने इस फंक्शन को 2 बार कॉल किया, पहले आपने ए एरे के पास की, फिर दोबारा में बी एरे पास की, इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन तक ये दोनों मेथड, दोनों एरे में डेटा इनपुट हो गया। व्हाट माय पॉइंट, यस। now I'm taking another array for for calculating for perform addition, matrix addition. I'm taking another array. Okay, for this case, can you please tell me, for this case, how many array I need while calculating the, while performing the matrix addition? We don't need, we can directly access. Okay, first array is name what, a, second array name is b, in third array is what, where exactly we want to store the result, that is what, result array. ओके, रिजल्ट एरे, तीन एरे की जरूरत है, इन दोनों में डेटा पहले से पहुंच चुका है। कब पहुंचा था, जब मैंने ये दोनों फंक्शन कॉल किए। ये 2 बार फंक्शन जब कॉल हुआ तो 2 बार इनपुट हुआ, 2 बार इनपुट हुआ तो दोनों ए और बी में डेटा पहुंच गया, राइट। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट, इजी है कैलकुलेशन ना, हाउ टू कैलकुलेट, वेरी इजी। और हाउ टू परफॉर्म मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन ऑपरेशन, okay, you simply write same loop, and instead of result you need to use what, result, and is the name of array, result I of j equal to a of I of j, first array name, plus b of I of j। इजी है, एडिशन हो जाएगा, एडिशन होकर कहाँ स्टोर होगा, रिजल्ट वाली एरे में। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले, डिस्प्ले मैट्रिक्स एडिशन। Now I want to display matrix addition. Easy. Inside the matrix addition, I want to use what, enhanced for loop. I want to use what, enhanced for loop. Matrix addition result. Okay, very simple. What? Tell me fast, please. Results. So result is also 2 dimension. Now I'm taking results. Results is what, 2 dimension. Okay. This is what, result array. Results. इसके अंदर रिजल्ट स्टोर होगा। ओके, सो आई एम स्टोरिंग दैट रिजल्ट इज व्हाट, 2 डायमेंशन, आई एम टेकिंग 1 डायमेंशन। व्हाट माय पॉइंट, enhance for loop, I'm using enhance for loop to display the elements। इजी है, कल समझाया था मैंने। ओके, so the result is what, r, and re,
इनहेंस फॉर लूप क्लियर है नहीं? इनहेंस फॉर लूप देखो, जब यहाँ पर 2 डायमेंशन एरे होगी तो 2 डायमेंशन को आप किस में कॉपी कर दोगे? 1 डायमेंशन में। और 1 डायमेंशन ये 1 डायमेंशन को आप किस में कॉपी करोगे? एक सिंगल वेरिएबल में। सिंगल वेरिएबल में क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट नॉट एलन आर in concatenation operator backslash the tab. Okay, so no need to use what plus plus minus minus like that. इस तरह के आप लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। ओके, बट इनहेंस फॉर लूप यहाँ नहीं लगा सकते थे बिकॉज ऑफ दैट आई नीड व्हाट प्लस प्लस प्लस, है ना? देखो आई नीड व्हाट प्लस प्लस की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि हम आई और जे के बेसिस पे, इंडेक्स के बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। बट हियर वी आर नॉट फाइंडिंग एनी इंडेक्स, we can directly printing the elements. Okay, we need not to use index, that is why we can directly use what? Enhance the for loop. Okay, if you are not digesting enhance for loop, so you can also use like this. I'm commenting out. Okay, simple है, आप ऐसा कर लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो you can use like this. Instead of R by using लिख देता हूँ, by using enhanced for loop, by using traditional for loop, by using what? Traditional for loop. Okay, so all good. By using this function, I'm calling this input array data 2 times, means what? A array में data input हो जाएगा and then B array में data input होगा. Okay, and after that I need to call what? Perform matrix addition method, because of I want to calculate. It's also non-static. We need to call this method by using object reference. Okay, तो ये मेथड का काम करेगा? कैलकुलेशन करेगा। क्या कैलकुलेशन करेगा? दो मैट्रिक्स यानी ए और बी को एडिशन करेगा। एंड देन आई वांट टू डिस्प्ले दिस इज आल्सो नॉन स्टैटिक, so we need to call this method by what? Object reference obj dot like this. All good? Any doubt? No, sir. Okay, so just I'm copying this same piece of code and execute on Java editor. Okay, Java editor. So first I need to import which package? Java.util package, because of I'm using scanner class. For what purpose? To take input from keyboard purpose. Okay, at the time of executing the program. Now all good. Now I'm also comment out, so also removing the comment. कमेंट रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? रिजल्ट 2 बार डिस्प्ले हो जाएगा। जो फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट होके आएगा 2 मैट्रिक्स का एडिशन, वो 2 बार डिस्प्ले होगा। फर्स्ट बार जो डिस्प्ले हो रहा है फर्स्ट टाइम बाय यूजिंग एनहांस फॉर लूप, एंड सेकंड टाइम बाय यूजिंग व्हाट? सेकंड टाइम बाय यूजिंग टेल मी फास्ट प्रिंट एलन। जैसे एक रो कंप्लीट हो जाएगी वैसे न्यू लाइन ले लेगा, प्रिंट एलन लिख देगा। ओके, न्यू लाइन के लिए कब न्यू लाइन आएगी? जब एक रो पूरी प्रिंट हो जाएगी। मतलब इस वाले रूप की कंडीशन जब भी फॉल्स होगी तब न्यू लाइन लेगा। इसी केस में इस वाले रूप की जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब न्यू लाइन ले लेगा। ओके, दिस इज नॉट प्रिंटिंग समथिंग, मतलब आप एक चाहते हो जिस तरीके से हमने डेटा इनपुट किया उस ऑर्डर में डेटा जो है डिस्प्ले हो। ओके, नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग द सेम कोड, कंपाइल द कोड। Getting so many errors. Okay, now we need to observe first point. Array good, no issue, that's good, but here there is no an array. Like
I'm using A. So instead of array, you use A. Okay, very good. In this second, now I'm displaying something. Okay, no issue. So you have to use what? You are printing results. Okay, array name is what? Results. Okay, you need to remove as and copy this array name instead of this. All good. Okay, now again compile the program. Compiles fine. Okay, now I'm executing the same piece of code. Enter an element into 3 cross 3 matrix. Suppose I'm inputting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Okay, I'm again input into another array like 1, 3, 4, 5, 6, 6. Okay, no issue. 7, 8, 9. What is the result? This is the result. Result will print two times. Result will print two times. You have to observe. First result is printing by using enhanced for loop. By using what? Enhanced for loop. Second result is printing by traditional for loop. This is what? Tell me fast. This is what? Sir, traditional for loop. हाँ तो दो ओवरऑल पर्पस क्या था प्रोग्राम का पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज व्हाट to print the addition of two matrix. So first I take input first matrix and then second matrix and then calculating the matrix. Okay, उनको calculate किया and then printing the results. दोनों matrix का addition print कराया बस. Got my point? Yes, sir. Okay. So any other example I need to execute or will we start a new more topic? You want to ask any other questions like transpose, multiplication, subtraction? Subtraction is very easy. You have to copy same piece of code and into the new page, like use like instead of addition subtraction you have to use subtraction. Yes, sir. We can Okay, only change operator. only change operator instead of plus you have to use minus. Okay, and also name or change the name of the method like subtraction, subtraction, subtraction. Okay, subtraction, subtraction. यहाँ पे भी आप you have to change also here subtraction, subtraction, and also change here matrix subtraction. इजी है ना ये तो फिर इसमें कुछ बताएंगे सर आपको माइनस लगाना है कहाँ लगाना है माइनस जल्दी बताओ भाई where I need to apply subtraction, subtraction, display matrix addition, display matrix subtraction, display matrix subtraction. Okay, matrix subtraction operation. Okay, I need to use what minus. यहाँ माइनस आपको यूज कर लेना है बस सेम प्रोग्राम है बाकी मैंने वेरिएबल्स के मेथड के नाम चेंज कर दिए है ना नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस पीस ऑफ कोड कंपाइल टाइम एरर मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन just a minute matrix subtraction very good why I'm getting compile time matrix subtraction c is missing na c is missing okay subtraction subtraction
Subtraction. Subtraction. All places C is missing. Subtraction. 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 C is missing. Subtraction. Okay, only the spelling mistake problem. Okay. Now again I'm going to compile. Compile is fine. Executing the same piece of code. Now I'm entering like 9, 8, 7. Okay. 9, 8, 7 and 6, 5, 4. Now 3, 2, 1. I'm entering into the second array. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. क्या रिजल्ट आएगा? पहला डेटा पहले डेटा से सब्सट्रैक्ट होगा. 9 माइनस 1 8 आ जाएगा पहले वाले पोजीशन पे. 8 माइनस 2 6 आ जाएगा. 7 माइनस 3 4 आ जाएगा. राइट, इस तरीके से सब्सट्रैक्ट होता रहेगा. देखो क्या क्या आ रहा रिजल्ट. पहले पे 8 आया. 9 माइनस 1 8, 5 minus 2 6, 7 minus 3 4, very good. 6 minus 4 2, 5 minus 5 0, very good. 4 minus 6 minus 2, 3 minus 7 minus 4, 2 minus 8 minus 6, 1 minus 9 minus 8. Got my point? Please tell me fast. Yes, sir. Any doubt? No, This is sir. what completely related to subtraction. Okay, and then so these program two I develop these two programs. You can develop this program, or I need to develop multiplication of two matrix. So we will try. Okay, you have to try in the lab section or in any of the time. Okay, now I'm developing one more program. That is what transpose of the matrix. So how can you develop transpose of the matrix? You have to copy the same piece of code. Don't try it again and again. Okay. Transpose means what? First you tell me. Transpose means what? Anyone tell me what is the meaning of matrix transpose? कौन बताएगा भाई ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स? What is the meaning of transpose the matrix? Transpose of the matrix is very easy यार. रो को कॉलम में बदलना होता है, कॉलम को रो में बदल देना होता है. That is what transpose of the matrix. Okay, कैसे बदलोगे आप? Yes, sir. आपको स्टोर भी करना है. ट्रांसपोज पहले स्टोर करना है, देन आपको डिस्प्ले कराना है. ठीक है ना? तो फर्स्ट टाइम परफॉर्मिंग ट्रांसपोज ऑपरेशन. ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑपरेशन. जब आप ट्रांसपोज करोगे किसी मैट्रिक्स को, सेम साइज की एक और मैट्रिक्स लोगे और इसको स्टोर कर दोगे बी में. सपोज वो बी है या वो रिजल्ट है. ठीक. ट्रांसपोज कैसे करते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑपरेशन. ट्रांसपोज ऑपरेशन. हाउ कैन यू ट्रांसपोज? वेरी सिंपल. रो को ये रिजल्ट है, रिजल्ट में क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स स्टोर होगा. तो कैसे स्टोर करोगे? सिंपल है. जो अभी आई क्या है? आई हमारा कॉलम है. जे क्या है? रो है. ओके सॉरी, आई हमारा रो है, जे कॉलम है. तो यू हैव टू रिवर्स. जे एंड आई को आप क्या बना दोगे? कॉलम बना दोगे. जे को क्या बना दोगे? रो. और वो आई जे पे स्टोर हो जाएगा. आई जे मीन समझ पा रहे हो? आई जे सपोज करो एक एरे है. ये एरे सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Got my point?
इस एरे की इंडेक्स क्या है 0 0। अब इंडेक्सिंग मत पूछना भाई कैसे बनती है, मैं बहुत डिटेल में समझाया मैंने डायग्राम बना के ना। 0 1 एंड 0 2। ओके इंडेक्स लिख रहा हूं मैं 1 0। टेल मी फास्ट नेक्स्ट इंडेक्स, नेक्स्ट ऑफ 5, 1 1 नेक्स्ट 1 2 नेक्स्ट 2 0 नेक्स्ट। 2 1 ओके एंड 2 देन 2 ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी और जे की भी 0 होगी, राइट। 0 0 yes का sir डेटा इसके 0 0 पे पहुंच गया, यहाँ समझिएगा, ठीक है ना। ये पहला वाला जो है ये आई है, ये दूसरा वाला जे है। पहला वाला आई है, दूसरा वाला जे है। पहला वाला आई है, दूसरा वाला जे है, ठीक है ना। ये रिजल्ट वाली मैट्रिक्स तैयार हो रही है, ठीक है ना। रिजल्ट वाली मैट्रिक्स तैयार हो रही है, इंडेक्स वही रहेंगी, बस आपको कहाँ से डॉट का कॉपी करना है ये ध्यान से समझना होगा, ठीक है ना। इसके इंडेक्स 0 0 है, 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 एंड 2 2। व्हाट माय पॉइंट, समझो यहाँ पर। तो फर्स्ट सबसे पहले ए की ए यानी ये वाली मैट्रिक्स की बात हो रही है, इसकी जे, ये मतलब अभी स्टार्टिंग में 0 है और आई का मतलब जब जो जे यहाँ से बढ़ रहा है ना, जे में कितना है 0, आई में भी 0। 0 0 पे जो डेटा रखा हुआ है वो कहाँ पहुंच जाए, वो रिजल्ट वाले 0 0 में पहुंच जाए, यानी कि यहाँ पर 1 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे जे इस ये लूप चल रहा है ना, यानी कि जे बढ़ जाएगा, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ओके 1 होने के बाद 1 ऑफ 0, आई की वैल्यू 0 ही है, 1 ऑफ 0 पे कितना रखा है, ये ए है, ये क्या है ए वाली एरे है, ये ए एरे है। ए की इंडेक्स कौन सी है 1 0, 1 0 मीन ये 1 0 वाली इंडेक्स। अब कहाँ पे पहुंच जाए 0 और 1 पे, 0 1 कौन सा है ये, यानी कि 4 कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, समझ रहे हैं बात को। एंड देन फिर जे बढ़ेगा, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 2, और आई की अभी कितनी है 0। 2 ऑफ 0 पे, 2 ऑफ 0 पे कितना रखा है 7, और वो कहाँ पहुंच जाए आई का मतलब 0, जे का मतलब 2, 0 2 0 2 कहाँ पर है यहाँ पर है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। समझे भाई क्या हो रहा है। yes sir एंड देन 2 2 5 8, ये ऐसे स्टोर हो जाएगा। सर जैसे हम लोगों ने सी में किया था प्रोसीजर तो वही है। अब प्रोसीजर तो लॉजिक तो वही है ना, लॉजिक में कोई चेंजेस नहीं है। yes sir लॉजिक तो भाई किसी के काम को करने के प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक लॉजिक थोड़ी नहीं होते हैं, प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक होता है, लॉजिक इज कॉमन फॉर एनी ऑल ऑफ द लैंग्वेज, राइट। Logic is common for all of the language. The logic is not related to any of the programming. Okay, these are the yes common. sir. Very good. So now I have already saved the program. That's good. So input, data input done, data transpose also done. Now I'm going to display. Now I'm going to display. So we need to copy the code. Copy the code of displaying the code. Okay. Display transpose of the matrix. Display what transpose of the matrix. Okay. Void display matrix transpose okay matrix transpose, ठीक है ना। तो डेटा किसमें स्टोर हुआ है रिजल्ट वाली एरे में, तो मैंने ट्रांसपोज को इस तरीके से आइटरेट कर लिया एंड देन डिस्प्ले करा दिया। ओके ऑल गुड। सो फर्स्ट आई नीड टू कॉपी द क्लास नेम and then one by one first I need to create object of what matrix transport class. Okay and pass obj and call input method. What is the name of input method, input array data, and we need to pass what
first array like obj dot a, and then perform need to call transpose operation method. Okay, if you call this method, then transpose of the matrix will be done, and then we need to call what? Display matrix transpose method. This is what this method is used to print what? This method will what? Print the result of the transpose of the matrix. Got my point? Yes, sir. Yes, sir. Easy है ना? Now I'm going to compile. I'm going to compile. Compile is fine. Now I'm executing the program. Okay, enter. Suppose I'm entering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, result is what? जो डेटा रो में इस तरीके से रो वाइज प्रिंट हुआ है, तो डेटा कॉलम वाइज प्रिंट हो जाएगा. गॉट माय पॉइंट? यू हैव टू ऑब्जर्व. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ पर डेटा क्या रो वाइज प्रिंट हो रहा था, यहाँ पर कॉलम वाइज. दिस इज व्हाट transpose of the matrix. Okay, I am giving you one or two program related to array also, like display the left diagonal of the matrix of the 2D array. Display the right diagonal. Display the right diagonal. कैसे कर पाओगे? Right diagonal of the 2D array. So these are the example you have to try. If any of the case you may face doubt, you can ask me. Okay? Yes, sir. Or do we need to execute any of the program? Tell me fast. What is No, the sir, meaning we of will try. diagonal? What is the meaning of left diagonal? What is the meaning of right diagonal? Suppose let's observe. This is what 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Left diagonal means what? 159. Diagonal means what? ये आपका आंसर होगा 159. Very good. 5 9. And right diagonal means what? Right diagonal 357. means what? 3 5 7. Good. इजी है. कैसे करोगे? लॉजिक बताओ जल्दी से. यहाँ पर बस पूरा प्रोग्राम आप इनपुट ले लोगे या डेटा इनपुट हो जाएगा. नो इशू. बस लॉजिक बताओ. लॉजिक देखो. लॉजिक कितना आजी है. ये देखो, ये पोजीशन का नाम क्या होगा? इंडेक्स का 0 0. ओके, इस वाले इंडेक्स का Yes. नाम क्या होगा? जल्दी से बोलो इस वाले इंडेक्स का नाम. I am not asking all of the index. What is the index of 5? बोलो भाई. 5 की So index क्या 1 होगी? 1 1 1 1. Very good. What is the index of right? 2 2. 2 3. 2 2, not 2 3. 2 2 2. 2 2. That means what? What is the logic? Where if लूप के अंदर लिखोगे if जहाँ पर I मतलब रो और j की वैल्यू सेम हो जाए. जहाँ पर I और j की वैल्यू सेम हो जाए. देखो यहाँ पर I ये है, j ये है. Yes, sir. I ये है, j ये है. I ये है और j ये है. राइट? दोनों की वैल्यू Yes. क्या सेम होगी? दैट इज व्हाट लेफ्ट डायगोनल. ओके, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द लॉजिक? ये लूप के अंदर लिखोगे, यहाँ पर आप इसका लॉजिक लिख रहे हो. ठीक है ना? कैन यू प्लीज टेल मी द लॉजिक ऑफ लेफ्ट डायगोनल? Tell me fast. What is the index of this position? 0 2. 0 2. What is the position of this index? 1 1. What is the position of this value? 7 की index क्या होगी? 2 0. 2 0. Can you find any of the logic? क्या कंडीशन लगाओगे यहाँ पर? You have to observe.
You have to observe. Tell me fast. Any logic? Yes. Think logically ना. देखो दोनों indexes को अगर आप जोड़ दोगे, that is what